In the previous class, we had started the topic of projectile motion. We had derived the expression for equation of trajectory of projectile, which came out as this. So let us do one thing. Let us store these equations at one place. The equation of trajectory is given by this. Y is equal to x tan alpha minus gx square upon 2u square cos square alpha. So this is one equation that we have collected. Then let us move on. Time of flight of projectile on a horizontal plane. That means if a projectile is thrown like this, it takes the shape of a parabolic path and then it falls down back on the ground at some distance. So we call this horizontal distance as the range, and the time taken for the parabola or the projectile to travel from here to here as the time of flight t. We had derived this as 2u sine alpha divided by g. Let us again collect this bit of information. Another equation. Horizontal range of projectile was derived by us. Let us collect this also. U square sine 2 alpha upon g. लेक्चर चल रहा है क्या मनु सर? Maximum range is obtained when you throw the projectile at an angle of 45 degrees. I think I gave this particular part of the lecture for you guys to study on your own. These are the formula that you have to remember. Range of projectile is given by this formula. This will be maximum when the value of sine 2 alpha is maximum. Now sine 2 alpha will be maximum when it becomes equal to 1. And it becomes equal to 1 when 2 alpha becomes equal to pi by 2. So if 2 alpha is pi by 2, that means alpha should be equal to pi by 4, or pi by 4 means 45 degrees. So this is the condition for obtaining the maximum range of a projectile. The question here is, at what angle should I throw my projectile? What should be my angle alpha so that my projectile goes to the maximum distance possible? See, if you throw it like this, it will go and reach here. If you throw it like this, it will go and reach here. If you throw it like this, it will go and reach here. So as you see, initially when you increase the value of alpha, the range of your projectile is increasing. But if you become too greedy and try to send it at a very high angle, then it will start falling short again. See, this is how your parabola will fall short if angle is too high.
So that means neither a very high alpha is going to give you a large range, nor a very small alpha is going to give you a large range. So it has to be somewhere in between. And as it happens that the alpha value of 45 degrees is the optimal value for obtaining the maximum range. So your angle of projection for projectile should be exactly 45 degrees to obtain the maximum possible range of projectile. This you have to remember. So the formula of range and the maximum range possible, which is obtained when alpha is 45. Now, if you feed angle 45 here at alpha, then 2 alpha becomes 90 and sine 90 becomes 1. So R max is nothing but U square by G. So this is the value of maximum possible range. Then comes, what is the maximum height of projectile on horizontal plane? Maximum height means, suppose you started the projectile at some angle alpha, you throw it into the air. Now you want to know what is the maximum height to which the projectile reaches before starting its downward journey. So this is what we are after. So once again, I had asked you, this is a very simple, it's not even a derivation, it's a two-line derivation. Initial velocity in the vertical direction is u sine alpha. Vertical component of final velocity becomes 0 here. And then it starts a new journey of traveling downwards. So you simply apply this formula, v square minus u square is equal to 2gh. And you put the value of v as 0. Because at this highest point, the vertical velocity component becomes 0. So what remains is this part, you substitute it, and after rearranging, you get the value of h max as u square sine square alpha upon 2g. So this is another equation which we need to collect and remember. What is the maximum height reached by the projectile? Let us collect this also, put it somewhere. Another formula. Now, one additional question comes in. What should be the angle of projection if you want to achieve the maximum height? It should be 90 degrees. How do you 90 know? degree. Because just look at the expression. This expression will become maximum when sine square alpha becomes maximum. Now sine square alpha will become maximum when the value of sine square alpha becomes equal to 1. And that is only possible when alpha is equal to pi by 2 or 90 degrees. So what is the meaning of this? The meaning of this is, out of all the possibilities of throwing your parabola or projectile in different angles, see, this is a small angle projection, this is a larger angle projection. So you keep on increasing your angle of projection, you will see that the height reached by the parabola is eventually going to be maximum when you throw it purely vertically upwards. But now, actually, what is going to happen is, when you throw it vertically upwards, the path taken will no longer be a parabola. It will be a straight line. It will go upwards and then come back down the same line. But that is the condition for maximum height reachable. So in order to throw the stone or throw the projectile in such a way so that maximum height is achieved, you have to throw it perfectly vertically upwards, not in the form of a projectile. Anyway, that was just a curious type of observation. And now we eventually move on. Have we collected this height of projectile? Okay. So we have with us these four formulae that you should remember for horizontal projection of projectiles. Okay.
equation of trajectory, time of flight, range of projectile, height of projectile. Four formulae to be remembered by heart. Now, we come to a special case of projectile motion where you are standing on an inclined plane, a very long inclined plane, and you throw the projectile upwards so that it travels and eventually falls here. And now what we are interested to know is what is the range of a projectile if I throw it on an inclined plane. So this is the range. When you throw it up an inclined plane, the range of the projectile becomes this. Now the trick for finding the range here is first to observe that beta angle which the inclined plane makes with the actual horizontal datum line or the x-axis is a constant. This has to be remembered by you. That beta is the angle of inclined plane and it does not change. It is a constant. Next thing, whether you throw a projectile standing at some point upwards, whether it is on an inclined plane or whether it is on a horizontal plane, the trajectory of the parabola remains the same, or the projectile's trajectory is exactly the same. Or rather, you can say that the particle traveling through the air does not know that it is going to fall on an inclined plane. ये पार्टिकल आप ऐसा अज्यूम करो जैसे कि किसी सेंसिबल ऑब्जेक्ट को भेजा है, तो इस ऑब्जेक्ट को पता ही नहीं है कि नीचे इंक्लाइंड प्लेन रखी हुई है. ये तो इस पाथ को देखो आप, ये तो ऐसे चल रहा है जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही गिरना है मुझे. और अगर ये इंक्लाइंड प्लेन यहां नहीं होता, then the particle would have continued its travel and eventually it would have fallen on the horizontal plane. So actually the positioning or the placing of an inclined plane does not affect the path of the projectile at all. वो तो वैसे ही ट्रैवल कर रहा है जैसे कि आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे उसको फेंका हो. This is the behavior of the projectile. Now the only thing that you are doing is you have created an artificial inclined plane over here. Now when you place an inclined plane at an angle of beta here, the projectile will experience a surprise. बोला कि मैं तो नीचे जा रहा था, ये एकदम से रुकावट आ गई, so it will fall here. That is what is happening. Otherwise the trajectory equation remains the same. So what I am saying is you have two conditions now. The first condition is that the projectile is traveling on an horizontal plane. The second condition now we are dealing is that the projectile is traveling on an inclined plane. But actually you know that the inclined plane is just an artificial obstruction. This parabola and this parabola are exactly the same. The only thing is you stopped the parabola in between here by placing an inclined plane over here. So the thing that I am trying to emphasize over here is that the equation of trajectory, this equation, is exactly the same for horizontal motion and for motion on inclined plane. ये दोनों ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन कॉमन रहेगी पैराबोला की, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. बट ऑब्वियसली द रेस्ट ऑफ द स्टफ इज गोइंग टू चेंज. कैसे? टाइम टेकन या टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे होगा? अगर ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता, then the time of flight would have been the time taken for the journey complete to the horizontal end point. But now you have stopped the projectile here itself. So time of flight will be affected. The range will be affected because in the horizontal plane you were measuring the range from here to here. But on the inclined plane, the range is measured from here to here. So the formula of time of flight and range will change. What is your opinion about H max?
maximum height, will it change or not? Change होगा या नहीं होगा? Height of the parabola, maximum height reached by the projectile. This is not going to change. Why? Because the person is standing here. If he was standing on a horizontal plane, he would have stood here. If on the inclined plane, he is standing here. And since the trajectory of the particle is exactly the same, the topmost point of the trajectory is still the same. See, so the person standing here will see that the particle has moved to maximum height this much. The person standing here will also see that the particle has moved to a maximum height this. So the maximum height of parabola or the projectile does not change from the perspective of the man. Yes, you can argue that if the person travels on the inclined plane and comes to this point and he looks at the particle at an inclined direction like this, then this should be the height. So this will be a different scenario, but we are not talking about this. If you simply talk about the height, maximum height reached by the projectile from the point of view of the person who threw it, in that case, H max is going to remain the same for horizontal plane and inclined plane. There will be no difference. It is the same because the trajectory of the parabola or the trajectory of the projectile is the same. Okay. So we have collected some information and now let us see how to calculate the range of projectile on an inclined plane. Now the derivation for this goes like this. I will explain. This is also a standard derivation. See, what we have done is, we know that the parabola or the projectile is going to fall here on the inclined plane. So what we did was, we know that beta is the angle. So we took the x and y coordinates of this point. So if you declare this unknown distance as r, this is what we are after. This is what we want to find. So you declare this distance as r and then say that if this distance is r, then this coordinate must be r cos beta and this vertical coordinate should be r sin beta. So in other words, what you can say is, with respect to the origin being taken as the starting point of the particle, the coordinates of this point becomes r cos beta and r sin beta. And now another thing that you observe is that if you Bhaskar, ये थोड़ा सा धीरे आवाज में बात करो. Another thing that you want to note is, if you treat the path of the parabola or the projectile, then this coordinate point r cos beta sin r sin beta is a member of this path. Or in other words, what I'm trying to say is, if you simply look at the path taken by the particle, then this a point, which has the coordinate of r cos beta r sin beta, it occurs on the path, on the trajectory. So what we can do is, we say that if r cos beta r sin beta is a point on the trajectory, that means this point should satisfy the equation of the trajectory itself. बोले कि भाई जब ये पॉइंट इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर रखा है तो इसका मतलब है इस पॉइंट को, इसको अगर मैं x की जगह फीड करूं और इसको अगर y की जगह फीड करूं तो ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है इसको सेटिस्फाई जरूर करेगी ये, बिकॉज दिस पॉइंट इज अ पाथ, इज अ पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ द पार्टिकल एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू. x की जगह पे r cos बीटा, y की जगह पे r sin बीटा रख दिया. दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर ट्रैजेक्टरी. ये अपन ने कलेक्ट करके रखा हुआ है, ये याद रखना था.
तो x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos अल्फा, इस इक्वेशन को डायरेक्टली आपने मेमोरी से रिकॉल किया और बोला कि y की जगह तो रख दो r sin बीटा, x जहां पर भी दिख रहा है वहां पर हर जगह पे r cos बीटा रख दो. So you substitute it here, r cos beta, r sin beta, r cos beta. After substitution, what you have to do is simplify this equation. इसमें एक तो आप चीज देखोगे कि r कैंसिल होगा, 1 r will cancel out here. यहाँ पे r स्क्वायर बाहर निकल के आएगा, उसमें से एक r कैंसिल हो जाएगा, एक r रह जाएगा. So after cancelling out the r on both sides, now your complete equation contains only one value of r. Now you have to rearrange this equation in such a way so that r is isolated on the left hand side, and you rearrange all the other terms of this equation to the right hand side to obtain this expression. ये चीज अभी अपन पूरा मैनुअली करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. दिस इवन अ 8th class student can do. You take the LCM of these two terms and do the rearrangement yourself, and eventually you should be able to get this expression. तो आपने बेसिकली r की वैल्यू को आइसोलेट कर दिया. इसमें से क्या क्या स्टेप्स किए अपन ने वापस से एक बार देखते हैं. व्हाट आर द स्टेप्स अंडरटेकन टू फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन. You took the inclined plane, set the angle as beta, this is a constant. You declared this as the range, क्योंकि आपका प्रोजेक्टाइल यहां से स्टार्ट हुआ और प्लेन के होने के कारण वो यहीं पे गिर गया. But you know that the projectile was not expecting the plane to be here. It actually had a plan to go down like this, just as if it had been thrown on a horizontal plane. But anyway, as you declared this as r, you get the coordinates of this common point as r cos beta, r sin beta. And since this point is a part and parcel of the path of the projectile, you take the equation of the path and substitute r cos beta in place of x and r sin beta in place of y in this equation. You get this equation, you simplify it to a further extent, isolate r on the left hand side, and you get this as the expression for range of projectile on inclined plane. But this can be further simplified. This is a very big equation. Now you see, in this part, you get a trigonometric identity that you are aware of. Sin A cos B minus cos A sin B. This can be simplified as sin alpha minus beta. Okay. So after this simplification, now the range on an inclined plane is this equation. Now you can stop your derivation here and you simply say कि बस मुझे मिल गई range, ये रहा, ये formula काफी है. This formula is enough for us. So you can remember this formula. So in order to do that, let us take this out and include it in our collection. But you have to remember this equation as range on inclined plane. इस तरीके से जैसे मैं आपको कलेक्ट करके बता रहा हूं, you have to collect all the equations in a piece of paper and then remember them all. ये देखो कितने इक्वेशंस हो गए आपके पास में. इक्वेशन नंबर 1, equation of trajectory. Equation number 2, time of flight for horizontal plane. Equation number 3, range of projectile for horizontal plane. Equation number 4, height of projectile for horizontal plane. And now a new equation, equation number 5, range of projectile on an inclined plane. So you are collecting all the equations, and as I told you, you have to remember all these equations and formulae by heart.
because when you start solving numerical problems, then you don't have time to go and look at the derivation again and again. So you should be simply ready with all the stuff. ये equations की एक list बना लेनी है आपको, अलग से एक notebook में maintain कर लो और रट लेना इसको. Okay, now let us move on. Now the next question comes. Just like we found the maximum range condition for horizontal flight, on a horizontal plane, you said that the range of the projectile was given by this equation, and you derived the condition for maximum range and the expression for maximum range as u square upon g. Now the same thing we want to do here too. बोला कि हमने रेंज तो निकाल ली, रेंज का इक्वेशन ये आ गया, इतना काफी है, ठीक है. बट नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजिंग द रेंज? नाउ यू सी देयर आर टू एंगल्स इन्वॉल्व्ड. Before going further, let us remember and understand the concept of alpha and beta. Beta is the angle made by the inclined plane with the horizontal. Alpha, please note, is measured from the horizontal, not over the inclined plane. कई सारे जने क्या गलती करते हैं, inclined plane बना दिया, बोला कि projectile is projected at an angle of 20 degree. So they measure 20 degree from the inclined plane. This is wrong. If angle of projection of projectile is given without further instructions in the question, then angle of projection has to be taken from the horizontal, not from the inclined plane. और ये पूरी डेरिवेशन जो है, इसमें जहां जहां पर भी अल्फा रखा हुआ है, ये इसी एजम्पशन के साथ में रखा हुआ है कि अल्फा इज नॉट मेजर्ड फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन. नो, अल्फा हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ओनली. ठीक है, क्योंकि आपने ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन वही सेम रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन का, तो उसमें जहां जहां पर भी अल्फा है वो हॉरिजॉन्टल से ही नप रही थी, उसमें इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट था ही नहीं. तो इसीलिए अल्फा और बीटा के चीज को ये याद रखना है कि अल्फा एंड बीटा बोथ द एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, एनीवे वी हैव एन अल्फा एंड बीटा and we have an expression of range, but to maximize the range, r max की कंडीशन पता करने के लिए अपने पास में अब दो पैरामीटर्स हैं, अल्फा और बीटा. बट बीटा इज अ कांस्टेंट. आपने एक इंक्लाइंड प्लेन पे खड़े हो गए, तो इंक्लाइंड प्लेन कोई झूला तो है नहीं जो कि चेंज हो जाएगा. तो ये इंक्लाइंड प्लेन आपकी जमीन ही इंक्लाइंड है. सो बीटा इज अ कांस्टेंट. ओके, तो इसका तो कोई वेरिएशन होना ही नहीं है. सो इफ r हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड, देन यू हैव टू फाइंड अ कंडीशन टू मैक्सिमाइज दिस कलेक्शन ऑफ टर्म्स. व्हिच वन? cos अल्फा इनटू sin अल्फा माइनस बीटा का जो प्रोडक्ट है, इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. बट नाउ इट इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज कि भाई अब इसमें भाई cos और sin दोनों उल्टे चलते हैं. अगर अल्फा को बढ़ाऊं तो sin अल्फा तो बढ़ता है, cos अल्फा घटता है, और अल्फा को घटाऊं तो cos अल्फा बढ़ेगा, sin अल्फा घटेगा. ये दोनों उल्टा बिहेव करते हैं. So simply by looking at this expression, it is very difficult to say कि मैं अल्फा को क्या करूं जिससे कि r मैक्सिमाइज हो जाए. So in order to simplify this dilemma, this problem that we are facing कि भाई अल्फा का अब करना क्या है, बढ़ाएं कि घटाएं जिससे कि r मैक्सिमम मिले अपने को इंक्लाइंड प्लेन पे. तो अपन एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिक इंटरवेंशन करते हैं यहाँ पे. We make a small trigonometric intervention. Now look how we are tweaking the information here. I combine this 2 here with this trigonometric group. तो मैंने क्या किया, u स्क्वायर बाय g cos बीटा को, g cos स्क्वायर बीटा को अलग से ले लिया, और 2 इंटू cos अल्फा sin अल्फा माइनस बीटा को एक ग्रुप बना लिया. This is not difficult to understand. ये तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से. And after that, what I have done is, look at this equation. Can I write 2 cos a sin b
एज द डिफरेंस बिटवीन साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। ये पहले जरा सोच के बता दो आप, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? अभी मैं जनरल ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं। हाँ, यस सर। कर सकते हैं ना? अब यस आपको सर। क्या करना है, एल्फा को तो ए ट्रीट करो, एल्फा माइनस बीटा को बी ट्रीट करो, ठीक है? And now apply this formula. Now you see that in this group you have 2 cos alpha की जगह cos a है और sin alpha minus beta की जगह sin b है। Now treating alpha as angle a and alpha minus beta as angle b, apply this part. Sin a plus b कितना हो जाएगा? Sin alpha plus alpha minus beta is sin 2 alpha minus beta. What will be a minus b? That means alpha minus beta. What will this become? This will become equal to beta. तो ये आ गया आपका sin बीटा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कैसे अपन ने किया है? We had already derived the expression for range. This is the formula for range. ये तो याद रखना है आपको। But if somebody asks you कि find the condition in which R will become maximum for inclined plane, in that case you have two terms containing alpha and it is difficult to predict in which direction the range will go if you increase or decrease alpha, and that is why we are doing a trigonometric rearrangement here. अब ऐसा रीअरेंजमेंट करने से आपका जो रेंज का एक्सप्रेशन है वो ये बन गया। अब इस ये जो इतना मेहनत किया और जो काम किया, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अब आपकी इस पूरे एक्सप्रेशन में अल्फा की सिर्फ एक ही टर्म रह गई। प्लीज सी। So basically speaking, this expression and this expression are exactly the same. There is no difference between this and this. But by rearranging this expression in this way, the only thing that you have achieved is that you have managed to position alpha into one single term. अब किसी भी टर्म में alpha और नहीं है। And now I can say that if I want to maximize R, what should I do? अब इस एक्सप्रेशन में देख करके बताओ कि R को मैक्सिमाइज करने के लिए sin 2 alpha minus beta को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। And if I want to maximize sin 2 alpha minus beta, that means 2 alpha minus beta should be equal to 90 degrees. बीटा कांस्टेंट है, उसको उस तरफ पटक दो, सो दैट मींस 2 अल्फा शुड बी इक्वल टू 90 माइनस बीटा, सॉरी 90 प्लस बीटा, और इन अदर वर्ड्स, फॉर दिस होल एक्सप्रेशन टू बी मैक्सिमम, द अल्फा वैल्यू शुड बी इक्वल टू 45 डिग्रीज प्लस बीटा बाय 2, एंड दिस is the condition for maximum range. ये चीज समझ में आ गई कि अपन ने क्या किया है यहाँ पे? ये सारे जुगाड़ जो किए ये आपको क्लियर हो गया? यस सर। So now remember this also. 45 plus beta by 2, or in terms of radians you can say the condition for maximum range on an inclined plane is alpha should be equal to pi by 4 plus beta by 2. This is the condition. ठीक है, अब आपने बोला कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैक्सिमम कब आती है अपनी रेंज? व्हेन अल्फा वाज 45, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर मैं 45 एंगल पे प्रोजेक्टाइल को छोड़ूं तो रेंज होगी कितनी? u स्क्वायर बाई जी। अब ये जो सेकंड पार्ट है कि r मैक्स होगा कितना, वो पार्ट अब अपन आगे करते हैं इससे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर योर रेंज। अब आपको इस नए वाले इक्वेशन की जरूरत नहीं है, इसको तो डिराइव करने के लिए अपन ने काम में ले लिया, अब इसको छोड़ दो, याद तो अपन यही रखेंगे, ये छोटा इक्वेशन है, सो दिस इज बेटर फॉर अस टू रिमेंबर। ठीक है, तो अब आपने बोला कि नाउ आई नो
that range will be maximum when alpha becomes equal to pi by 4 plus beta by 2. ये मेरे को पता लग गया. तो अब मेरे को करना क्या है, आर मैक्स निकालना है. तो मैं अल्फा की जगह सिंपली पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2 डाल देता हूं. अब ये अल्फा में ये जो डालने का काम है वो या तो यहां डाल दो आप, लेकिन यहां डालोगे तो फिर यहां पे डालना पड़ेगा, यहां एक और अल्फा है. So what you can do is you can put the value of alpha here if you want. यहाँ पर एक ही बार डालना पड़ेगा. So put the value of alpha equal to pi by 4 plus beta by 2 at this location to get the maximum value of r. तो ये आ गए अपन यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में डाल दिया इन्होंने. पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा अल्फा, तो ये पाई बाय 2 प्लस बीटा माइनस बीटा हो गया. दे कैंसिल आउट. इसके अंदर सिर्फ पाई बाय 2 रह गया. साइन ऑफ पाई बाय 2 1 है, तो 1 माइनस साइन बीटा रह गया. ठीक है. एंड नाउ दे डू अनदर ट्रिक. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया. नीचे कॉस स्क्वायर बीटा है, कॉस स्क्वायर बीटा को इन्होंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा. एंड नाउ यू नो दैट इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस a minus b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है जरा बताओगे क्या? हाउ कैन आई कैंसल आउट द टर्म्स? ये जनरल अरिथमेटिक की बात कर रहा हूं मैं अभी. a माइनस बी ए प्लस बी. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a माइनस b इंटू a प्लस b. And if I write like this, then a minus b and a minus b will cancel out, and what I will be left with is 1 upon a plus b. That is what we are doing here. 1 minus sine beta upon 1 minus sine square beta. Now treat 1 as a and treat sine beta as b. तो ये a minus b upon a square minus b square का फॉर्मूला हो गया. So I can cancel this whole term 1 minus sine beta with this, and what I will be remaining with is 1 plus sine beta. And this is the expression for maximum range. ये समझ में आ गया क्या आपको? क्या मैथमेटिक्स लगाई है यहाँ पे? क्लियर हो गया? Yes sir. So you can remember this also, but I would suggest कि आप तो या तो रेंज का ये फॉर्मूला याद रख लो या फिर ये याद रख लो, इन दोनों में से कोई सा भी एक, और अल्फा की ये याद रख लो कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजिंग द रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है. तो आपकी जो लिस्ट ऑफ इक्वेशंस है इसमें मैं 2-3 चीजें और ऐड कर देता हूं. ठीक है. पहले तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐड करता हूं. आर मैक्स इज ऑब्टेन्ड एट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4. ये एक इक्वेशन और याद रख लिया आपने इसके साथ. ठीक है. नीचे आ गए, बोला कि ये इंक्लाइंड प्लेन की तौर याद रख लिया. आर मैक्स at alpha is equal to pi by 4 plus beta by 2. ये एक इक्वेशन और याद रख लें इसके साथ साथ. ठीक है. अब आप सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो या फिर अलग से भी याद रख सकते हो कि अगर मैं अल्फा पाई बाय 4 यहां रखता हूं तो आर मैक्स बनती कितनी है. इफ यू वांट टू रिमेंबर इट सेपरेटली then you can write it as r max is equal to u square by g. यहां पर क्या बनेगा? If I substitute my alpha equal to pi by 4 plus beta by 2 in this, then what will be obtained here?
In that case, R max will be u square upon g into 1 plus sine beta. Another equation if you want to remember. So it's your choice. See, slowly as we are progressing, the number of equations that need to be remembered is also increasing. 1, 2, 3. Now this is 4, 5, 6, 7, 8 equations. अभी 8 equation already हो गई अपनी याद रखने के लिए. बट इन एनी केस याद रखना तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है. मैंने पहले ही कह दिया, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करने को आएंगे तो आपको बिल्कुल फटाक से इक्वेशन तैयार होनी चाहिए आपकी. डेरिवेशन और सब्स्टिट्यूशन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. बट if you are confident that you can remember how to substitute quickly and get the results then and there, then go ahead with that. It's your choice. I leave it to you. जो जैसा आप पसंद करें याद रखना, रट लेना ज्यादा बेहतर समझें या डिराइव करना बेहतर समझें. इट्स योर चॉइस, बट यू नीड द फॉर्मूला एनीवे. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, what happens if we are talking about a projectile on an inclined plane, but instead of throwing it upwards, I am throwing it downwards. अब यहां पर एक दूसरी कहानी बात कर रहे हैं, ठीक है. Inclined plane is there. We had taken the complete mathematics and treated in such a way so that you are sending the projectile upwards on the inclined plane. But somebody can ask you a question that if instead of sending the projectile up the inclined plane, what will happen if I am standing over here and I throw a stone and the projectile is going down the inclined plane? And in this case, the range will be taken from here to here. So this will be the range. So will the range remain the same? क्या रेंज की इक्वेशन वही सेम रहेगी क्या? आपको क्या लगता है? क्या ये रेंज, यानी कि एक पत्थर को यहां से ऊपर फेंका और यहां गिरा तो एक रेंज मिली, और आदमी आकर के अब ऊपर चला गया इंक्लाइन प्लेन पे खड़ा होकर के, अच्छा नीचे को खूब जगह है, लंबी जगह और पड़ी हुई है. So do you think that if he throws the stone from up and the stone travels downwards, the distance covered by the stone or the projectile is going to be the same? आपको क्या लगता है, सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग. बिल्कुल अलग होगा, ठीक है. Now do we have to do the calculations and the derivations all again? क्या हमको ये दो केसेस के लिए अब वापस से पूरा डिराइव करना पड़ेगा क्या? वापस से मैं इसका r cos बीटा sin बीटा लूं, फिर उसकी ट्रैजेक्टरी के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करूं एंड देन आई फाइंड r बाय रीअरेंजमेंट? नो. नाउ यू सी, the only difference in throwing a stone up an inclined plane and throwing it down an inclined plane is in the sign of your inclined plane. That's all. अब देखो इस डायग्राम को देख करके आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. Let us say we are taking the path of the trajectory down the inclined plane. यहां पर आदमी खड़ा है, यहां से पत्थर फेंकेगा. Let us take the horizontal datum here. Horizontal datum यानी कि horizontal reference line is this. If the person had thrown the stone up an inclined plane, तो हॉरिजॉन्टल डेटम यहां होता. ये देखो, अब आदमी यहां से अगर पत्थर फेंकता तो आपका पैराबोला यहां बनता और उस केस में बीटा यहां होता. अब आदमी क्या कर रहा है? प्रोजेक्टाइल इज बीइंग थ्रोन लाइक दिस, बट नाउ इन दिस केस योर बीटा इज हियर. देखा आपने? दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. So what you have done is,
Initially, if the inclined plane was like this, then your projectile would have come here. But now you have taken your beta below the horizontal. So in all, if you look at this diagram, the only thing that changes in the complete mechanism of this story is that instead of beta, you are replacing it with minus beta. If you had sent the trajectory up the plane, then beta would have been measured from the horizontal in anti-clockwise direction upwards, is direction. But since you are sending the projectile down the inclined plane, you are actually measuring beta from the horizontal downwards or clockwise. So बीटा इज रिमेनिंग द सेम, इंक्लाइंड प्लेन तो वही है, ऊपर को फेंकोगे तो बीटा पॉजिटिव, नीचे को फेंकोगे तो बीटा नेगेटिव. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी कैन सिंपली से कि भाई हम तो अपनी इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल या रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन का इक्वेशन यही रखेंगे हम. लेकिन इसमें क्या करेंगे, जहां पर भी बीटा दिखे उसको रिप्लेस कर दो माइनस बीटा से, एंड यू विल ऑटोमेटिकली गेट योर इक्वेशन फॉर सेंडिंग द प्रोजेक्टाइल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग. यहां पर मैंने नोट्स में यही लिख दिया है, व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड ऑन अ डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन, then the range of flight will be given by substituting minus beta instead of plus beta in the above equation. So all you have to do is, see, this was the equation 2 alpha minus beta, तो बीटा की जगह माइनस बीटा लिखूंगा तो प्लस बीटा हो जाएगा. साइन ऑफ बीटा माइनस बीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा तो माइनस साइन विल कम आउट एंड दिस विल बिकम प्लस साइन बीटा. So your equation simply gets transformed into range is equal to, ये सब कुछ ऐसे ही u square by g cos square beta सब कुछ वैसा ही आ गया, u square by g cos square beta, और sin 2 alpha minus beta की जगह पे sin 2 alpha plus beta और minus sin beta की जगह पे plus sin beta. That's all. So there are two cases for projection on inclined plane, whether the projectile is sent upwards or downwards. तो ये चीज आपको याद रखनी है, अगर अपवर्ड है तब तो बीटा पॉजिटिव है, डाउनवर्ड है तो बीटा नेगेटिव है, बस ये ध्यान रखना है. बाकी सारी चीजें वही की वही. उसी तरीके से व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजिंग द रेंज व्हेन यू आर थ्रोइंग द प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. तो उस केस में भी जो अल्फा की कंडीशन निकाली थी आपने, अल्फा कंडीशन इज पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2, तो इसमें भी बीटा को माइनस रख दो तो दिस विल बिकम माइनस बीटा बाय 2. यहां पर आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2. ये पाई बाय 2 नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, दिस इज पाई बाय 4. ठीक है, पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2 हो जाएगा. जस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लस बीटा, यू रिप्लेस प्लस बीटा बाय माइनस बीटा. ठीक है, और उसी तरीके से मैक्सिमम रेंज का जो एक्सप्रेशन आया था फॉर इंक्लाइंड प्लेन, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा, यहां पर भी बीटा को माइनस रखोगे तो 1 माइनस साइन बीटा बन जाएगा. ये 1 माइनस साइन बीटा. So this way you have completed the expression for range of projectile thrown on inclined plane, whether you throw it upwards or you throw it downwards. Okay, and similarly now time of flight on inclined plane. अब ये छोटा सा डेरिवेशन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है. टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइंड प्लेन के लिए पहले तो ये बोल रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लाइट इज u cos alpha into t. पहले देख लेते हैं ये बात सही है क्या. ये देखो, the velocity of projection is u, the angle of projection is alpha measured from the horizontal. Okay, now what we are saying is कि प्रोजेक्टाइल तो यहां पर आकर के गिर गया, तो इसने प्योरली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, यही कवर किया. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर x कवर की
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो u cos अल्फा है और t टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, अब ये x क्या था, r cos बीटा था, ये अपन ने अभी देख लिया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इज दिस एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू r cos बीटा। तो r cos बीटा को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, u cos अल्फा वैसा का वैसा रहेगा इनटू t। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज सिंपली r cos बीटा डिवाइडेड बाय u cos अल्फा। सीधे सीधे निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करने का है, r का फॉर्मूला आपके पास है ही, इंक्लाइंड प्लेन पे r का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, इस एक्सप्रेशन को ले लो, या फिर अगर ये पसंद नहीं है तो दूसरा एक्सप्रेशन ले लो ऊपर वाला। यू कैन टेक एनी वन ऑफ दिस, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, दोनों r के ही एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब r के साथ में क्या करना है अपने को, r के साथ में cos बीटा को मल्टीप्लाई करना है और u cos अल्फा से डिवाइड करना है। तो इन्होंने टाइम ऑफ फ्लाइट बनाने के लिए ये एक्सप्रेशन ले लिया है, बस ये ले लिया। ये r है, r को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन यहां पे, cos बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, u cos अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं। cos बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और u cos अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं। ये बन जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। cos बीटा से cos बीटा कैंसिल, cos अल्फा से एक cos अल्फा कैंसिल, u से एक u कैंसिल। सो व्हाट रिमेन्स इज 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा, 2u sin alpha minus beta upon g cos beta. This is expression for time of flight. ठीक है, another formula for you to remember. Time of flight for inclined plane. Again this will change. टाइम ऑफ फ्लाइट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना है, माइनस बीटा की जगह पे प्लस बीटा हो जाएगा। नीचे भी आप माइनस लगाओगे कॉस बीटा में भी, लेकिन कॉस ऑफ माइनस बीटा भी कॉस बीटा ही होता है। सो नथिंग विल चेंज इन द डिनोमिनेटर, ओनली द साइन विल चेंज इन द न्यूमरेटर। बस इतना सही है, ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन आज अपन ने कवर कर लिया है। इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज टुमारो वी विल डू द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग अपनी नोटबुक्स, पेंसिल्स और कैलकुलेटर्स अगली क्लास में तैयार करके रखना। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी अपन ये जो कलेक्शन ऑफ फॉर्मूले हैं ये यही रख लेता हूं मैं, कल भी अपन इसको यहीं से यूज करेंगे और इन फॉर्मूलों को देखते हुए सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, आई विल टेक द अटेंडेंस। आज जो कुछ भी पढ़ाया आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, और वॉज देयर अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरे ख्याल से, ये सब आपने पहले पढ़े हुए हैं ये सारी चीजें, एवरीथिंग राइट? यस सर। और आज जो पढ़ाया सब चीजें क्लियर तो हो गई ना आपको? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल्स करके फिर इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे एंड नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट काइनेटिक्स। अभी तो अपन काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं।